Very good morning to everyone. Okay, everybody join. So this is EC1B batch now. Fine. Yes, yes, join soon everyone. Shall we start? Okay. So in the last lab session, we had discussed one of the case study that is for the installation of operating system either in dual mode, either in virtual mode. So I have told you to write a case study over this topic. So have you done that? Have you completed that case study, guys? Someone is saying no, yes. Okay. Manish, is it available with you right now? Can you please share the screen with us? Okay, ma'am. Within 5 minutes, ma'am. And some other people are saying no. Why no? Why you people have not completed? This was the task I had given to you, na? You should complete it. Fine. So this is the first thing, first classwork that I had given to you. Take it seriously from the next time. Don't forget to do the things before the lab. लैब से पहले पहले आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम होता है सो मेक श्योर दैट यू विल कंप्लीट योर वर्क विद इन द डेडलाइंस डोंट टेक इट कैजुअली I have created one Google Classroom for your submission of your classwork or lab work as well. So I have created Google Classroom as per lab batch wise, right? So today I have created a Google Classroom for B batch. I have sent an invitation to you. So kindly accept that invitation, whosoever is pending. Many people are still pending. So kindly accept that invitation. Have you find the invitation? Have you got the invitation now for Google Classroom? Nidhi saying no. I had sent to you, Nidhi. Jay Shankar. Let me check, huh? Jay Shankar, it is already sent to you. Check your email IDs. Nidhi, you too. Okay, so whatever the submissions you need to do over there only in Google Classrooms. So some accept the invitation as soon as possible. Today we will going to do installation of operating system, how to install operating system in the machines or in our devices. So basically, I'll teach you how you will do. How many of you want to install operating system in your devices? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करना है wants to do on their own laptops? Khushi is saying no. Khushi, you do not have laptop? Then how you will perform the things? How the practicals you will perform?
It is not available online. Yes, it is available, but if you have laptop, then what is the issue? You should perform now on your machine, and you will also learn how to do these things. Okay, Miss Machine, Miss Manish, are you there and you can present now? Okay, yes, ma'am, I can see. Ma'am, Yeah, no problem. ma'am, screen is visible. Yeah, yeah. Mute yourself and just show your screen. Yes. Installation during the virtual. Okay. Next. Installation first, ma'am, first phase. Okay. And then Next. virtual mode operating system, and then real mode operating system. No, no, no. This is the you had written about the operating system installation steps. I had discussed you the advantage and disadvantage of these two modes that we had Oh, discussed in the lab session. Are you okay. waiting? Okay, ma'am, next time I will do it. Yeah, yeah. Just you will change these things. Thank you. Yes. Ma'am, stop. Yes, Ma'am, Manish. So we had discussed in the previous lab that what are the advantage and disadvantage of both the modes. That is, what is the advantage and disadvantage of dual mode, and for the same in the virtual mode. Right? You can also compare these two over there in your case study. So I hope everybody is clear with these things. Ki what to need to perform in case study. There is any doubt still to anyone? Okay, you know now what to do in the case study. Fine. So I had already given you 1 week of time to complete that case study. So I will create a link. I will create a announcement over there in the Google Classroom by today, and by end of today you have to submit this case study over there. Fine. This is the first task you need to perform by end of today only. After that you will not able to submit it. Today is the only deadline. You will complete your case studies and submit over there in the Google Classrooms, right? Okay. So today we're going to discuss the installation steps of your operating system in virtual mode. How you will going to install operating system. आप virtual box में operating system को कैसे install करते हो आज हम वो सीखेंगे. उसके लिए क्या करना है आप लोगों को. I had created one Google Classroom for you, and over there I have shared two of the links. I'll show you. If you can see that I have created this Google Classroom for VBatch, and these are the two links I have shared with you over there. These are the two links you required for the installation of your Ubuntu in your VirtualBox. So this is the ISO file, Ubuntu ISO file. You will find the Ubuntu ISO file from here only. आप Ubuntu का setup यहाँ से download कर सकते हो. Here it is given. You can download this setup from here, right? And the second thing you require is the VirtualBox setup that is given by the Oracle. VirtualBox का setup आपको कहाँ से मिल जाएगा? इस link से that you will download as per your platform. Whatever the platform you are using, you can download from here. VirtualBox, right? For example, if you are using Windows, you can download from Windows host, and in this way you will get these two setups for your installations. So these two things you will get from online. You have to download these two setups online. So whosoever wants to install Ubuntu in their systems will follow these steps as I am doing. मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या करना है. So as per the steps I will follow, you will just follow. No, 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 no. There's no bad effect on your system whenever you will install in VirtualBox. That's why I'm teaching you how to install in VirtualBox. There's no nothing affected in your original operating system if you will install in VirtualBox. That's why I'm saying you should install in VirtualBox.
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो फाइल्स आपको डाउनलोड करनी है। वर्चुअल बॉक्स को आपका इजीली डाउनलोड हो जाएगा। इट इज अराउंड सम MBs, I think it is around 20-30 MBs, and your Ubuntu ISO file will take some time because it is around 2 GBs, right? आपको ये दोनों फाइल्स पहले डाउनलोड करनी है। It will ask in which you want to log in whenever we. No, 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 no. It will not ask anything. This is why I am teaching you in virtual boxes. Because whenever you need Ubuntu, only that time you can open that virtual box. जैसे कि अभी मैं आपको अपनी ही screen में दिखाती हूँ. I will show you here. Let me present my screen. So you will see. uh, you can see here I am having a virtual box in my machine. If I want to operate, if I want to do work in Ubuntu, I can start this virtual machine. I am having Windows as an original operating system. If I want to work in Ubuntu, I can start this machine. And in this machine, I had already installed Ubuntu. If I want to start, I can start from here only. Right? There is nothing. If I want to delete it, just uninstall this application. It will not affect your system. Are you getting? So anyhow, this, if you are already having Ubuntu ISO file, that is fine. That is great. Then you can follow the steps with me side by side. So here I am going to teach you how to install the Ubuntu in virtual box. So if you are having your laptop, then you should firstly download these two files. That is Ubuntu, मतलब operating system का setup चाहिए पहले आपको, right? That operating systems आपके ISO format में होते हैं. So the extension of these files are ISOs, and then you require VirtualBox. Okay. What you need to do now? Let me show you. So see here now, these are the steps you need to follow. अब देखो आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, अगर आपको अपने सिस्टम पे, अपनी मशीन पे एज इन ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम इफ यू वांट टू install, then you need a bootable pen drive or bootable disk in which you will get the file of your operating system, that is your either of Windows or Ubuntu. Then you need to install that files. उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको bootable pen drive या bootable disk यूज करके स्टार्टिंग में आपको पार्टीशंस, आपके मेमोरी के पार्टीशंस होते हैं, आपको पार्टीशंस देने पड़ते हैं, कौन सी ड्राइव में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, वो स्टेप्स बस आपको फॉलो करने होते हैं। पर यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग इन वर्चुअल बॉक्स, तो वर्चुअल बॉक्स क्या है, एक तरह से एक एप्लीकेशन है, एक आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें आप एक वर्चुअली एक मशीन क्रिएट करते हो जिसमें आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर सकते हो. दिस इज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? So you can see here, when I open this VirtualBox manager, when I open this VirtualBox manager, what you will able to see here, you can see on the left side window, there are 2 or 3 machines are created. 2 or 3 machines are created. First machine is Ubuntu 16.04, राइट? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी मशीन, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अगर इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ती है इस इंटरफेस में, राइट? सो यू विल सी हियर हाउ यू विल क्रिएट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. उस मशीन को क्रिएट करने के बाद उसमें आपको कौन सी फाइल इंस्टॉल करनी है, फिर उसमें आपको फाइल इंसर्ट करनी पड़ती है. आई विल शो यू हियर. Firstly, you need to create new machine, new virtual machine. So you will go to new, right? You will click to new. It will ask you to create a virtual machine. So you will give the name of that virtual machine. So here you can see that Ubuntu 16.04 is already installed, and now at this time he is installing 18.04 version of Ubuntu.
right? The type and version of Ubuntu is all by default it will take, and if you want to change this, बाय डिफॉल्ट जो भी टाइप और वर्जन ये सपोर्ट करता है वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन अगर आपको फिर भी चेंज करना है, यू कैन ऑल्सो डू मैनुअली बाय दिस ऑप्शन, बाय क्लिकिंग ऑन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू, इट विल शो यू द वर्जन्स ऑफ सिस्टम, 64 बिट है, 32 बिट है, कौन से वाला है आपके पास उबंटू का, सो यू कैन चूज राइट अकॉर्डिंगली. सो इट विल, इट इज सजेस्टेड, इट इज रिकमेंडेड टू चूज द बाय डिफॉल्ट वर्जन एंड गो टू नेक्स्ट, राइट. सो हियर इट विल आस्क यू व्हेनेवर यू विल क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, या जब आप नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स, मतलब नाउ यू आर शेयरिंग योर हार्डवेयर रिसोर्सेज विद द वर्चुअल मशीन. दिस इज व्हाट इट मीन्स. अब जब एक नई वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करते हो तो उसको ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको, जो आप क्रिएशन के टाइम पर उसे एक्सेस देते हो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इट इज आस्किंग फॉर द मेमोरी साइज. यू कैन सी हियर इट इज आस्किंग फॉर द रैम, दैट इज मेन मेमोरी. हाउ मच मेमोरी यू वांट टू गिव टू दिस मशीन. जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर 3 वर्चुअल मशीन्स क्रिएटेड हैं और तीनों में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ठीक है. इस वाले में आपने कितनी मेमोरी दी है, इसको कितनी मेमोरी देना चाहते हो, इट इज डिपेंड्स ऑन योर चॉइस as per the compatibility of your system. So it is recommended here to give the memory size at least 1024 MBs. How much GB it is? 1024 MBs. How much GB it is? 1 GB. 1024 MBs is equals to how much GBs? Yes, 1024 MB is equals to 1 GB. It means it is recommended here to give the RAM at least 1 GB. राइट, एटलीस्ट 1 GB रैम आप वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर आपके पास अवेलेबल है यू कैन ऑल्सो गिव. सो यू कैन सी हियर दिस ग्रीन एंड द रेड लाइन्स describes that the green line portion is safest part to give the resources. If you will extend the resources to the for the virtual machine, the performance of the system will degrade, right? सो आफ्टर दैट यू विल चूज द मेमोरी साइज. मेमोरी साइज आपको देना है, आप जितना चाहो मेमोरी साइज दे सकते हो, ठीक है, आपके पास जितना अवेलेबल है और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन यू कैन गिव. then go to next. Here you have to select the memory size for the virtual machine, ठीक है. then you need to create a hard disk. आपके पास देखो यहाँ पे लिखा है if you need a if you wish to you can add a virtual hard disk to the new machine. देखो ऑलरेडी अभी ये जो वर्चुअल मशीन है ना, अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं इसमें. डू नॉट एड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क. आप या तो वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड ही नहीं करना चाहते हो, either you can create a new one, either you can use an existing one. अब वर्चुअल मैनेजर में, वर्चुअल बॉक्स के मैनेजर में हार्ड डिस्क अवेलेबल है, या तो आप उसे यूज ही नहीं करो, आपको ऐड ही नहीं करनी है. This is not an option. You want to use hard disk, then you can. Either you can use existing one, either you can create a new one. Existing one का क्या मतलब है कि जो वर्चुअल बॉक्स है इसके पास जो हार्ड डिस्क है वो पूरा का पूरा स्टोरेज ये यूज करेगा, ठीक है. बट इट इज ऑल्सो द अदर मशीन्स आर ऑल्सो यूजिंग द हार्ड डिस्क. दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क फॉर दिस मशीन, राइट. तो इस मशीन के लिए आप नई वर्चुअल डिस्क क्रिएट करते हो जिसमें से जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पूरे सिस्टम में 1 TB ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें से आपको कितनी इसको स्पेसिफाई करनी है, कितनी इसको देनी है, आप उसे दे सकते हो, ठीक है. दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिंग अ न्यू हार्ड डिस्क हियर, न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क हियर. सो यू आर क्रिएटिंग, यू कैन चूज दिस ऑप्शन, गो टू क्रिएट. Right, when you go to create, the first option you have to open, that is VirtualBox disk image, right. This is the file type you are choosing, then go to next. Here it is asking for you the storage on physical hard disk. देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में एक चीज बताई थी मेमोरी मैनेजमेंट में कि मेमोरी किस
तरीके से कौन से टेक्निक्स होते हैं मेमोरी एलोकेट करने के, वी विल डिस्कस इन द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. सो ब्रीफली आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक है, फिर फिक्स्ड है. सो देयर आर मेनी मोर approaches we are using for allocation of memory. So here the two options are given ki what according to your choice what you want to store for storage on physical hard disk. हार्ड डिस्क पे आप स्टोरेज किस तरह से चाहते हो? तो टू ऑप्शंस हियर आर dynamically allocated or fixed size. So definitely if we will dynamically allocate the memory, it is fast also, and it will create the fast it will create the storage, it will create the uh, memory on your disk faster rather than the fixed size. अगर fixed size की memory हम create करके दे रहे हैं तो it is not good good thing to use. I will tell you the things in your memory management unit that what is these two approaches, dynamic allocation and fixed allocation. अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा तो इतना आइडिया आपको शायद होगा कि अगर हम फिक्स साइज की मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसमें से कुछ मेमोरी हम यूज नहीं करते हैं तो जो बची हुई मेमोरी है वो क्या जाती है, वेस्ट जाती है. यू नो दैट व्हेन यू इसीलिए हम सी प्रोग्रामिंग में बाद में कैलोक मैलोक फंक्शंस यूज करते हैं डायनामिक एलोकेशन के लिए. हैव यू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट्स? अगर हमने कोई यस एरेज एंड लिंक लिस्ट की बात करें, अगर हमने कोई अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा इंट आई और मैंने फिर आई इंटीजर यूज ही नहीं किया तो मैंने 4 GB की जो मेमोरी 4 बाइट्स की जो मेमोरी है वो मैंने वेस्ट कर दिया, आई एम नॉट यूजिंग इट. तो डायनामिक एलोकेशन वी आर प्रेफरिंग ओवर द फिक्स्ड साइज एलोकेशन. डायनामिक एलोकेशन इज कि जितनी भी चाहिए उतनी यूज कर सकते हैं. फिक्स्ड में क्या होगा, मैंने एक फिक्स साइज दे दिया है, उसके बाद उसमें जितना भी साइज में यूज, अगर मैंने 10 MB मान लो फिक्स कर दिए, उसमें मुझे चाहिए 6, ठीक है, तो बाकी के 4 MB वेस्ट जा रहे हैं और कोई और प्रोसेस भी उसे नहीं यूज कर पा रहा है. सो वी आर चूजिंग डायनामिक एलोकेशन फॉर द storage, right? So you have to choose dynamic allocation. In detail, we will discuss in memory management about this concept. For now, you have to choose dynamic allocation and go to next. So here what you need to do, you are choosing the file location and size. So whenever you are installing some softwares in your system, where it is going to install, it is shows you the location. वो by default कौन सी location पे install होता है वो आपको location दिखाता है. उसने एक by default एक location choose की होती है. अगर आप उस location को change करना चाहो तो उस location को change भी कर सकते हो, but it is recommended to choose the by default location. And also you here you need to give the साइज. मतलब अगर आपको याद हो, अगर आपको ये चीज आपने देखी हो तो यू कैन रिमेम्बर दैट when we are installing operating system, total storage is divided into some number of partitions. जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो टोटल मेमोरी स्टोरेज होता है, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ऑफ 1 TB ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क बट विच वी आर टॉकिंग अबाउट. अब मुझे OS के इंस्टॉलेशन के टाइम पर पार्टीशंस करने होते हैं मेमोरी के, राइट? सो दीज पार्टीशंस आर कस्टमाइजेबल और नॉट. क्या आप ये जो पार्टीशंस हैं इनको कस्टमाइज कर सकते हो इनके साइज को? कैन यू चेंज द साइज ऑफ दिस पार्टीशंस इन योर सिस्टम? यस और नो? कैन वी चेंज? Yes, we can change. So also during the installation of operating system, it is asked from the user. अब वो क्या करता है, अब एक जीबी जो 1 TB की जो मेमोरी है ना, उसको तीन में मतलब वो पूछता है कि आपको कितने पार्टीशन चाहिए. सो हम उसमें अगर 3 सेलेक्ट करते हैं तो वो उस 1 TB को 3 इक्वल साइज में डिवाइड करके हमारे पार्टीशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि C, D और E, उसने 3 पार्टीशन क्रिएट किए, राइट? लेकिन अब कौन से वाले में आप जो लोकेशन यहाँ पे दी है, मतलब किसी एक पार्टीशन में तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं. डू यू नो दैट इन सी ड्राइव और इन ई ड्राइव और इन डी ड्राइव, वट एवर द लोकेशन यू वांट, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी ड्राइव में यूज करता है, जो पहली ड्राइव होती है, ठीक है? जैसे कि सी ड्राइव है तो पहली ड्राइव में वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है ना, इंस्टॉल होगा तो स्पेस भी लेगा आपके सिस्टम में और उसकी फाइल्स भी स्टोर होंगी. तो आपका सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है. वैसे ही यहाँ पर आपकी फाइल को इंस्टॉल करने की लोकेशन पूछ रहा है, वेयर यू वांट टू इंस्टॉल दिस फाइल.
वर्चुअल मशीन को आपको कौन से लोकेशन में सेव करना है, और इससे रिलेटेड फाइल्स भी आपकी वहीं सेव होंगी। एंड द सेकेंड थिंग, इट इज आस्किंग फॉर द पार्टीशन, हाउ मच मेमोरी यू आर गिविंग टू दिस फाइल। अब उबंटू इंस्टॉलेशन के लिए आपको थोड़ा स्पेस तो देना ही पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं आप सी ड्राइव की बात करो, तो कितना स्पेस है आपकी सी ड्राइव में, हाउ मच जीबीज इट इज हैविंग, in where your operating system is installed, how much GBs of this partition you are having in your systems, कितना साइज का पार्टीशन है वो जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। यस, 600, 256 means as per your convenient or as per your choices you had customized the partition। आपने अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली पार्टीशन साइज दे रखा है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि हम 100 जीबीज देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 100 जीबी हम देते हैं, ताकि जो मेरी, क्योंकि सारे के सारे जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सी ड्राइव में ही फिर जाकर इंस्टॉल होंगे। तो मैं उसमें इंस्टॉल करती हूँ बाय डिफॉल्ट, तो मुझे इतना स्पेस चाहिए कि सारे सिस्टम जो सी ड्राइव में सेव हो रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर सेव हो रहे हैं, वो एटलीस्ट उसमें स्पेस रहे, ठीक है। तो वैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे इट विल आस्क यू टू गिव द साइज फॉर द दिस पार्टीशन, इसके इंस्टॉलेशन के लिए कितना साइज आप देना चाहते हो। सो इट इज रिकमेंडेड यू टू गिव अराउंड 100 जीबीज। आप इसमें हार्ड डिस्क में एटलीस्ट 100 जीबीज इस पार्टीशन को दे सकते हो, 60 से 100 इन बिटवीन एनी number you can give. So here it is giving the size, select the size for the virtual hard disk, right? So it is giving some 70 or 80, 60 और 100 के बीच में हम कितना भी साइज दे सकते हो इस पार्टीशन को, इतना सफिशिएंट है। देन यू कैन क्रिएट द वर्चुअल मशीन। After giving the location and size to this machine, you can create this machine. So when you create this machine, you can see here, this machine has been created. On the left side window, you can see now there are 4 virtual machines exist. पहले 3 थी, अब चौथी भी एग्जिस्ट कर रही है। अभी हमने सिर्फ क्या किया, एक बॉक्स बनाया है, अब उस बॉक्स के अंदर हम उबंटू इंस्टॉल करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए एक बॉक्स का सेटअप किया है। अभी क्या करना है, उसके अंदर हमें उबंटू इंस्टॉल भी करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने एक नई मशीन क्रिएट की अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमने उसको रिसोर्सेज भी दे दिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू इंस्टॉल उबंटू इन इट, राइट। उबंटू इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू गो इनटू द सेटिंग्स, go to settings here, in settings there are two settings which is important, journal and system settings। journal settings में आपको कुछ advanced settings change करनी है, जैसे कि कुछ clipboards और आपके ये drag and drop options disabled होंगे, उसको आपको bidirectional करना है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, you have to go on to the system settings। सिस्टम सेटिंग्स में आपको क्या करना है, सिस्टम सेटिंग्स में मेनली आपके जो रिसोर्सेज आपने प्रोवाइड किया, आप उसको एलोकेट करते हो। लाइक बेस मेमोरी यू आर गिविंग, तो बेस मेमोरी आपको कितनी प्रोवाइड करनी है। सो दिस ग्रीन लाइन शोज इट इज द सेफेस्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ मेमोरी यू वांट टू प्रोवाइड टू द वर्चुअल मशीन। आपने जो प्रोवाइड की हुई है वही है ये। एंड देन द प्रोसेसर्स, from 4 number of processor, how many number of processor you want to give to this machine। मेरे पास 4 सीपीयूज हैं अगर मशीन में, और मैं इस वाले वर्चुअल मशीन को कितने देना चाहती हूँ। सो यू कैन सी अप टू 2 सीपीयूज इट इज सेफेस्ट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने 2 रिजर्व कर ली है, लेकिन जब मैं वर्चुअल मशीन चलाऊंगी, मैंने ओपन दिस मशीन, it will use 2 CPUs for this machine and and the remaining resources for the original system, right? So I will allocate the processors and base memory to this machine। कितने भी आप allocate कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ यही मशीन एक टाइम पे चलानी है, आपको विंडोज 7 नहीं चलाने, तो आप सारे भी दे सकते हो। then the next important part is the storage। what you need to do in storage, you can see here storage is empty first of all, right? You can see here in storage there is no disk image file is selected, कोई भी फाइल selected नहीं है। अब यहाँ पर आपको कौन सी फाइल select करनी है, जो आपने ISO फाइल डाउनलोड की है वो, ठीक है। अब वो आप यहाँ पर कैसे करोगे, you need to click on the empty line, then you need to click over here in this
एक सीडी टाइप का एक सिंबल बना है, दिस यू हियर यू हैव टू चूज अ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क और वट एवर द फाइल यू आर हैविंग। अगर कोई वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क है, कोई फाइल है तो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, उस आईएसओ फाइल को जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है वहां से आप उसे ओपन करोगे, राइट। जैसे आप इसमें ओपन करोगे वो फाइल वहां पर फेच हो जाएगी और आपको उस फाइल को उसमें सेव कर देना है उस मशीन में। So you said okay, right? So now you have fetched that ISO file in this virtual machine. Now start this virtual machine. You have to start this machine. अभी देखो Ubuntu मैंने इसमें fetch किया है, अभी मुझे इसमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। Now कौन सी ISO फाइल आपने इसमें fetch की हुई है? Ubuntu की। तो ये क्या करेगा? It will ask you for some language and it will ask you to try it or install it. Then you have to opt the option install Ubuntu, right? Then you will go for the install Ubuntu. Here you need to choose your keyboard layout. We are choosing mostly English US layout for our keyboard layouts or English UK. So it is suggested you to choose your keyboard layouts over here. जैसे कि Windows में हम start करते हैं, तो जैसे अगर हम अपना phone भी startup करते हैं तो starting में कुछ common settings हमसे पूछता है, right? Then choose this language and then continue. After that, it will ask you what apps would you like to install to start with. Whenever you will start with this system, we कौन से apps आपको install, you will go with the normal installation, download updates while installing Ubuntu, and also you have to check this install third party softwares. आपको क्योंकि third party softwares install करने पड़ेंगे तो ये आपको other options में select करना है before going to installation. So you have to select this option and then continue. Right here you can see here this computers currently have no detected operating system. What would you like to do here? So you will choose the first option, that is erase disk and install Ubuntu. So don't worry, the warning is also given here that it will delete your all files and programs and documents, photos, music. This will not affect to your original system and the other virtual machines available in your VirtualBox manager. It is only asking for that machine that you have created right now. जो भी आपने अभी क्रिएट की है उसी मशीन के लिए पूछ रहा है कि उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है उसके साथ, उसमें हमें ऑलरेडी उस डिस्क को इरेज कर देना है और उसमें उबंटू को इंस्टॉल कर देना है। अगर उसमें कोई फाइल होगी कोई और तो वो डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज उबंटू विल गोइंग टू इंस्टॉल हियर. So you have to choose the first option. Don't worry about the other things. Nothing will be deleted from your system. Right? Then you will opt the option that is install now. So once you opt this option install now, it will ask you to continue with it or not. So you have to continue. Then again you select some. You will select the place in the map. Then continue with it. After that, one most important setting is there. That is your आइडेंटिटी। व्हेनेवर यू एंटर इनटू द उबंटू ना, जब भी आप उबंटू इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या पूछता है, ये आपका नाम, राइट, हु इज द एडमिन ऑफ दिस सिस्टम, द नेम ऑफ द कंप्यूटर, इफ पिक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। बी careful here whenever you are using whenever you are choosing a username and password for your system। जब भी आप यूजर और पासवर्ड चूज कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखो, जैसे कि इसको मैं किससे रिलेट करती हूँ यहाँ पर। whenever you are using your एप्पल फोन्स यूज किए हैं आपको पता हो, तो जब भी आपको कोई नया कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है, इफ यू वांट टू इंस्टॉल एनी अदर एप्लीकेशन फ्रॉम द ऐप स्टोर, इट विल आस्क यू फॉर द एप्पल आईडी। Yes or no? Whenever you want to install a new application in your iPhone, then it will ask you for the Apple ID for installation of a new application. It will ask you or not? Do you know that? It will ask now. Whenever you will install a new application in your iPhones, it will ask you for the Apple ID. लेकिन अगर अपनी Apple ID नहीं पता है तो वो आपको इंस्टॉल नहीं करने देगा नई एप्लीकेशंस को। The same thing relates here in your Ubuntu.
जैसे कि विंडोज में क्या है, आपने सॉफ्टवेयर सिर्फ इंस्टॉल करते हो तो वो आपको क्या पूछता है, डू वांट टू इंस्टॉल इट, यस और नो, तो आप यस करते हो तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता है। उबंटू में बहुत सारी ऐसी कमांड्स आप यूज करोगे जिसमें आपको वो कमांड्स रन करने के लिए एडमिन की परमिशन चाहिए, तो वो उसमें यस और नो नहीं पूछेगा, इट विल आस्क यू फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ दिस डिवाइस। सो डोंट फॉरगॉट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब भी आप अपनी सिस्टम पे उबंटू इंस्टॉल कर रहे हो और आपने जो भी यूजर नेम और पासवर्ड पिक किया है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। सो probably you will do one thing, you will write it down somewhere in your notes, right? So उसे भूल नहीं जाना। if you want to choose a password you can choose, and if you don't want to choose a password just pick a username and go with the option login automatically, तो वो पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो भी यूजर नेम और पासवर्ड ऑप्ट करो, जस्ट रिमेम्बर दोज थिंग्स, because at somewhere when you use ubuntu commands it will ask you for this username and password, right? So you need to do this. It will, after using this it will take time for installation, so sit back idly, अपने सिस्टम को ऐसे ही छोड़कर बैठ जाओ थोड़ी देर, बहुत टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में। और इंस्टॉल होने के जैसे इंस्टॉल होगा इट विल आस्क यू टू रीस्टार्ट द सिस्टम, देन यू विल गो फॉर द रीस्टार्ट एंड हेंस योर ubuntu is installed in this। जैसे ही आप इसे कंप्लीट कर दोगे आपकी ubuntu इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। Is it clear how to install? Yes, it is. It will take time. It is a lengthy process. So it is also, you can see here, I'm showing you here some things. Some people are afraid of using VirtualBox in their system and also afraid of using two operating system at the same time. VirtualBox will not pay, आपको वर्चुअल बॉक्स यूज करना इज नॉट अ बिग डील, यू कैन यूज इट इजीली। आई विल शो यू हियर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मान लो अगर मैंने कोई, जैसे कि मैंने ऑलरेडी उबंटू यहाँ इंस्टॉल किया है, आई वांट टू स्टार्ट दिस, आई कैन स्टार्ट एनी टाइम एनीवेयर, राइट? इफ आई वांट टू, अगर मुझे नई मशीन भी ऐड करनी है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरा भी ऐड करना चाहती हूँ तो आई विल गो विद उबंटू 18.4। और अगर फॉर एग्जांपल अगर इंस्टॉलेशन के टाइम पर मेरी ये मशीन क्रैश हो जाती है, या फिर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम कर दी इंस्टॉलेशन के टाइम पर, या मेरे कुछ स्टेप सही से फॉलो नहीं हुए, तो आपका इसका प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि अभी क्या करना है, यू जस्ट डिलीट दैट पार्ट एंड यू कैन डायरेक्टली, you can see a new machine is created here। I have created this machine। अब मान लेते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पर, जैसे कि सेटिंग्स में जाती हूँ मैं, तो इसकी सेटिंग्स, it will take time to open। Is it visible to you or not? Yeah, it is visible। So whenever I go to the settings, you can see here some things are disabled here. You need to enable this. Then you need to go over the storage. That is the most important part। Storage में क्या करना है? This is empty। You need to open a file। ठीक है, आपको कोई वर्चुअल डिस्क या तो होगी आपके पास, या फाइल जो आपने डाउनलोड की आपको यहाँ ओपन कर देनी है, और फिर क्या कर देना है, आपको इसे चूज कर देना है। अब मान लेते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पर मेरे से कोई प्रॉब्लम हो गई है इस मशीन में, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली इसे रिमूव कर सकती हूँ। देयर इज नथिंग हैपन टू माय मशीन। रिमूव हो गया है ये मशीन, जो मैंने अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था इसमें। तो मेरे पास जो ऑलरेडी मशीन है वो अच्छे से है और वो स्टार्ट भी हो सकती है। इट विल गो विद इट। दिस इज नथिंग लाइक कि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे ओरिजिनल पीसी पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यू विल गो एंड ट्राई इट एंड इंस्टॉल उबंटू इन योर सिस्टम। ठीक है, सो यू कैन सी हियर इट इज स्टार्टिंग, इट इज रनिंग उबंटू। So these things are clear with everyone, how to install Ubuntu in VirtualBox.
So whenever you will download these two files, VirtualBox file, VirtualBox setup, and your Ubuntu ISO setup, you will follow these steps and install Ubuntu in your systems. Yes, Manish, what I'm saying here is you can refer this video. I will share this video with you all. Okay, and you can refer this video whenever you want to install. जब भी आपको install करना है तो आप इसे refer कर सकते हो. Okay, some steps are missing right now. Okay, you are installing right now. From where you want to see the Yes, step? yes, ma'am. Yes, From yes, where yes. you want to see it again? Ma'am, play once again, ma'am. Yeah, yeah, give me 1 minute. Yes, Manish. Now tell me from where I will play this video again. Ma'am, ma'am, after 2 3 minutes. Okay. So I will also do one thing. I'll share this video with you on Google Classroom. You can take the reference from there as well. VirtualBox will take 103 MB. Yeah, it will fine. It is around 100 MBs. So you will just install this setup, this operating system, Ubuntu in your machines by today or by in this week, and you will take the reference of these steps. I will upload this video in your Google Classroom. Whenever you want to install this setup, you can take the reference from there as well. Take the help. उसके बाद भी कोई problem आए तो you can ask me. Ma'am, from general settings, ma'am. What happened, Manish? Ma'am, from general settings. After?
from general settings, you can click. From journal settings. Yes. हाँ, ऐसा कर बात ठीक है. You can see. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So is these steps are clear to everyone? If you require, whenever you will install now, I will share this video with you in Google Classroom. You can take the reference whenever you will install this setup, and probably I hope you will just do it. And I suggest you, all of you, whosoever is having laptops, कि please install this setup in your systems. Whenever you will do this ना, you will learn how to do. ठीक है, जैसे ही आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है. ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को ब्रीफली बताया कि ये सब स्टेप्स हम क्यों किस लिए फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप वी आर फॉलोइंग हियर. That's why it is taking time. Otherwise, whenever you are going to follow this, na, the steps are very easy to follow. Fine. So you will just download these two files. The links are already over there in the Google Classroom, and I will also share that video with you so that you can take the reference in Google Classrooms. Fine. So this is your practical number one, is actually, that is installation of operating system. This is your practical number one, that is installation of operating system. So you have to make, now one thing, there are three tasks you need to do uh, in this week for this lab. First thing that you need to complete by today only, that is the case study, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो आपको आज के दिन में ही, by end of today you have to upload that case study. Fine. And I think one person, actually due to some network issues, I left out in between, and one girl was saying something about PPT. Who was that? So you will submit that case study in your Google Classroom by end of today. This is the first task. The second thing, you will install this setup in your systems. Install Ubuntu in your systems in VirtualBox, and you can take the help from this link. I will show you, I will share this video with you in the Google Classrooms. You can refer this video. And also after that, you need to complete your first practical. आपको आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करना है. फॉर दैट आई विल गिव यू द फॉर्मेट. फॉर द केस स्टडी देयर इज नथिंग स्पेसिफाइड फॉर्मेट. You can just write your enrollment numbers and names on your case study, and put it over and upload over there in Google, in your Google Classrooms. But for the first practical, I will give you the format. First practical is the installation of operating system. So either any of the way you can follow, either in dual mode, in virtual mode. तो जो भी लोग, अब देखो दो चीजें हैं, कुछ लोग तो इंस्टॉल कर रहे हैं, they can take the screenshot side by side, right? And whosoever is not doing, and whosoever is not having laptops, basically not doing, तो वही लोग हैं जो laptops जिनके पास अभी नहीं है. So there is nothing to bother about. You can take the reference of this video and also another video which are available online. Take the screenshots of installation steps and demonstrate the installation in that document. Is it clear? It is the first practical. It is installation of OS. So either any of the way you can represent the installation. Is it clear to everyone? Yes, others. Okay, so before next lab, you will complete this first practical and upload in the Google Drive. Fine? Okay. So there's anything you want to ask regarding this? Now, shall we close this session with that? Okay. So we are closing this session with that.